importance of agriculture diversification and need why we need to be self-sufficient, especially in edible oil. So he mentioned that we are importing edible oil worth 1 lakh crore of rupees, and we are meeting nearly half of our total demand of edible oil from import. Then state after state, almost every state shared their experience that how they are moving in the direction of diversification, how they are diversifying, especially those states where there is some sort of stress on natural resources, stress on water. So Punjab, Haryana, so like that the states share their experience in terms of what kind of incentive they are giving to farmer to shift the cropping pattern. Couple of states they came out with exact numbers that they are giving 8,000, 5,000 like that. Then right from Andhra Pradesh up to West Bengal, they told about whatever achievement they are making in increasing production of some of them in pulses, some of them in edible oils. And also states made suggestions that if they are helped in a particular way, they can go for diversification in a much faster manners. So I can't go state by state. I have written what Rajasthan said and what others said. But overall impression was that states were quite cooperative and they are already working in this direction, both for diversification and also for achieving this self-sufficiency. And both may not be synonyms, but everybody expressed that they are working in this direction. Just a second. Pardon? Sir, any intervention required from the central government in this regard? One of the rather two states they just mentioned about making MSP for pulses and oil seeds effective, and I have also noted that Rajasthan Chief Minister also expressed that if Rajasthan get better irrigation in 13 districts, they can spread area under mustard in a very big way, and that will also help in achieving self-sufficiency. The states also talked about, particularly Northeast, how they were expanding area under oil palm cultivation. Like Arunachal Pradesh, they have a target of 40,000. So this year they are bringing 4,000 hectare under this. Similarly, Tripura and like that. So mainly the demand which came was that MSP in case of pulses and edible oil need to be made more effective. Thank you, sir. Sir, I have a couple of questions. Number one, because what we see from the agenda that it was proposed that that's pulses you want to increase up to certain number like 510 lakh ton, something like that. And also for edible oil, there's about 40% increase that that is the target. So that's also much less than what we actually require. That's number one. And number 2 point, sir, you talked about diversification of crops, but the same year, this year, because of wheat and rice problem, our secretary, our ministers, they are asking states to grow more wheat and rice. That's quite contrast to what the government policy is. So a clarity on that. And the last question, sir, you talked about cooperative federalism. I think Naveen Patnaik had raised this question. If there is a problem between center and states, NITI Aayog should be the ombudsman. Can you just give a comment on that? As far as pulses are concerned, if you look at data for last 5-6 years, we have made substantive progress in increasing production output of pulses. And in fact, we are exporting little bit pulses also, and we are importing some pulses. In the case of pulses, we are now deficit only in Masur and to some extent in Arhar.
In the other kind of pulses, we are very close to self-sufficiency, and it has happened because last 5 years there is a big increase in production of especially chickpea, chana. So in case of pulses, our import dependence is now less than 7-8%. But in case of edible oil, the import dependence is still almost 50%. So that's why independent mission on palm oil, other oil seeds, the situation in case of oil seeds is quite serious as far as dependence on import is concerned. I'm coming to that. You just asked that if that is the case, then why government, some official made statement about ਸੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸਣੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। हमने एक नई जनरेशन का सुपर सीडर यहाँ पे लॉन्च किया। हमने 2 मॉडल सुपर सीडर के लॉन्च किए हैं, जिनको आप सुपर सीडर का पापा बोल सकते हो। तो ऐसा सुपर सीडर हमने लॉन्च किया जिसका हिंदुस्तान में किसी भी सुपर सीडर का उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसको सुपर सीडर का पापा क्यों किया जाता है? एक तो हम उसकी 2 साल की वारंटी देते हैं, एक पार्ट उसका एग्रीजोन कंपनी के अंदर बनता है। तीसरा, उसमें ट्रैक्टर की जो कम एचपी का ट्रैक्टर भी उसको चला सकता है और उसके ऊपर डीजल की खपत भी कम है। ये सभी चीज़ों को मिला के और उसमें टाटा स्टील जैसे लोहा को यूज किया जाता है, तो इन सभी को मिला के उसको सुपर सीडर का उसको पापा बना दिया गया है। और ये नई जनरेशन का सुपर सीडर जैसे हरियाणा गवर्नमेंट किसानों को बड़ा उत्साहित कर रही है कि आप वो पराली को आग ना लगाएं और पराली के समाधान के लिए जो मशीनें जितेंद्र जी ने ये एक जबरदस्त सुपर सीडर मशीन एग्रीजोन जो इंडस्ट्री ये चलाते हैं उसके माध्यम से सुपर सीडर मशीन यहाँ पर आज लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से क्योंकि किसान को अब अपनी पराली को जलाना भी नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक उस पराली को नीचे ही मिट्टी में मिला करके और उसको गेहूं को ये बीज डालने का खेत के अंदर काम करेगा और उसकी पैदावार के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी पैदावार भी बढ़ेगी क्योंकि उसके अंदर जो पराली एक खाद के रूप में नीचे जमीन के अंदर मिक्स हो जाएगी तो उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी। मैं जितेंद्र जी को और एग्रोजेन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आज यहाँ पर जो सुपर सीडर 2 मशीनें आज लॉन्च की गई हैं, एक जो डाकर वाहन है, डाकर वाहन के अंदर चलेगी और एक जो रेतीला खेत है उस रेतीले खेत के अंदर भी ये मशीनें काम करेंगी। और सरकार भी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो इस बात को लेकर के बड़ी प्रखरता से